Hello everyone. So welcome to part 3 of our NEET PG counseling series. In today's video, we'll talk about community medicine as a branch in your NEET PG counseling. And I have the pleasure of inviting Dr. Shailaja Yadav to my video today. So welcome, Dr. Shailaja. It's so nice to have you here. Thank you, Dr. Rishabh, and the pleasure is all mine. Very happy to be here. So a little introduction about Dr. Shailaja. So she did her MBBS from Lady Hardinge Medical College, New Delhi, and then her MD in community medicine from UCMS, New Delhi. So Dr. Shailaja, please tell us briefly about yourself as well. Thank you so much, Dr. Rishabh. My alma mater you've already talked about. I'm an MBBS from LH, and then LH had a very good community medicine department in the sense that they were very rigorous in academics. Okay. Because of that, I came to know about something called community medicine. So, since my second year itself, I was very sure I'm going to take up this subject. Okay. And yes, fortunately, I was actually able to get the subject and go to my dream branch. So then I ended up in one of the best departments of community medicine department that there is in our country, which is the Department of Community Medicine at University College of Medical Sciences. I completed my MD in 2022, and then I joined National Center for Disease Control. I'm a technical specialist there. What we deal with in terms of a sub branch of epidemiology or public health, it's called field epidemiology. So basically, my work pertains to surveillance data analysis, the disease surveillance that we do. So that is collecting the data and then making sense of that data for public health action. And the other arm is dealing with public health emergencies such as outbreaks. So we have the Mpox, which has now been declared a public health emergency of international concern. And then you must have heard of Chandipura virus outbreak that is going on in western parts of India right now. So controlling these kinds of outbreak and of course responding to COVID is the most familiar example. This is what my job in field epidemiology curtails. So just for the viewers, since we are into the video already, we'll talk about what community medicine entails, क्या include होता है community medicine residency में and the whole program. Then we'll also talk about what are the opportunities after you complete your MD medicine, be it your SRship, be it other field epidemiology, as ma'am said, or any other opportunities. We'll talk about opportunities outside India, in public health, in WHO, etc. We'll also touch about upon salaries that you can expect after your MD in community medicine. So a range of salaries, not exact, but we'll touch all these topics. So the first question to you, Dr. Shailaja, is, so what is community medicine program or residency that is there in India? What does it include? Great. Thank you for that. It's a very good question because we need to have some clarity on terminologies like community medicine and PSM. So community medicine is the department in the NDE, medical education sector of our country, which deals with the degree, academic degrees, which contain public health as well as some part of what we call family medicine. Okay. That is to say that most of the curriculum across the country, which has a community medicine department and they award the degree called community medicine, the PGs here, you can expect them to be well versed with the concepts of public health, epidemiology, our national health programs, as well as they will have some understanding of how to manage the patient, at least the first line of management they will know, because clinicals are an integral part of community medicine. Okay. So community medicine as a branch also by the NMC, it is declared as a clinical branch. Okay. Then we have something called community and family medicine degrees, which are provided by some of the AIMS right now. I cannot remember the exact institution which was offering it. I can get back to you on that. So basically in that they have mandatory family medicine clinics wherein they, in addition to only the medical management, which I just talked about for community medicine PGs, they also are supposed to conduct deliveries and conduct OPD surgical procedures. So day OPDs basically they're supposed to do. So that is to say that is it pays much more emphasis on the family medicine part, the community and family medicine degree. Then PSM is the subject which is taught in community medicine, but it is not the only thing that is taught in community medicine. So preventive and social medicine, or social and preventive medicine, SPM it is called, is a subject which deals with various aspects of public health as a branch, but it does not cover all the aspects of what a community medicine PG is supposed to do. So if I talk in terms of exams which you will give as a
MD community medicine, because that makes it much more easier to understand कि okay पढ़ना क्या क्या है हमें. So the first paper that you deal with is actually PSM, Preventive and Social Medicine, first and second, जिसमें आपको Biostatistics, Epidemiology, which are the basic building blocks of this branch, उनकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना होता है. यू हैव टू अप्लाई देम एज वेल. यू हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, बिकॉज दैट इज हाउ वी कम टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी यूज दिस अप्रोच टुडे एंड नॉट दैट अप्रोच. In addition to that, we deal with specific disease epidemiology as well. So we know that India mein there are certain conditions which are high priority for the health sector. So as a community medicine PG, you are supposed to deal with not only a single patient, like our patient unit is population. So you have to study about diseases in depth which affect the population at large. So you can expect that your community medicine PG might not know about a certain rare condition, but they are supposed to know all the things, including the clinical management of common diseases. So these are the two topics that you will cover in first and second paper. So when I say common diseases, they can then be divided on the basis of their etiology, then common diseases which affect your vulnerable groups such as men, women, children, then common diseases which affect certain vulnerable parts. For example, Northeast key conditions kya kya hai, health conditions kya kya. So in this way, you're supposed to approach the problem in community medicine. Then your third paper contains other subjects which are in addition to PSM, which is you would study health management, you study health economics. Now, this of course differs from department to department, that how much emphasis they will pay on these two subjects, these two additional subjects, because in my department, I was very lucky that we had good dedicated lectures for this. Then other than that, you also cover some part of research methodologies. So I'm sure that all of your viewers either have reached out to community medicine PG or will need to reach out to community medicine PG for either their sample size calculation or statistical analysis of thesis. That is because वो हमारे curriculum में embedded है, that we as public health professionals are supposed to be well versed with how do you generate an evidence. So in large, अगर हम health system के बारे में बात करें, so we are the ones who are responsible for generating the evidence, examining the evidence, and then passing on that evidence to the clinicians for implementation at the ground. So that is why it's important for us to know the research methodologies. तो उसमें हम सब अलग अलग टाइप की क्या research होती है और उससे associated जो biostatistics होती है, that all we have to study. And the fourth paper is something called miscellaneous, which is basically कि public health का, I'm sure ये हर कोई अपनी branch में सुनता होगा, but हम लोग community medicine में बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि our subject is very vast and there are virtually no boundaries. Because anything that affects your health, even one person's health, is a new exposure. So it is of public health importance. So for example, COVID forever हमारे syllabus में रहेगा. Then pandemic को लेकिन फिर manage कैसे करना है. This was something which was covered very poorly in the PSM books, but now with our lived experience, we understand. So as community medicine PGs, we are supposed to be very well versed with what is going in the world right now. What are the international bodies doing, what are the national health bodies doing. These are the kind of things which we cover in miscellaneous. And then of course you can have certain theoretical questions about certain concepts. जैसे अभी G20 हुआ था, तो उसमें health related क्या declaration थी, उसका हमारी country के health system पे क्या effect है. Critical thinking kind of things, these are taught. So these are the subjects we study, and PSM, to answer your question, is one of them. One of them. And just to complete the loop, public health is much more, which we will talk about subsequently. Yeah, so just to summarize, so we have epidemiology, biostats, we have preventive and social medicine, then we have health management, health economics, and then we have some miscellaneous topics as you discussed. So this is all what is included in the curriculum of community medicine. Yeah, but I want to ask you directly, because a lot of people take community medicine with the intention of being a clinician at the community level. Yeah. So how is actually the community medicine program different from that thinking? Okay. So this is something that I tell my interns when I'm trying to, get them jovial about the community medicine posting. That is कि बाकी सब clinical departments में interns को technicians की तरह use किया जाता है और peons की तरह use किया जाता है. I'm being very frank and blunt here. At least दिल्ली के, मैं तो दिल्ली से ही पढ़ी हूँ, तो दिल्ली के दोनों colleges में, because वहाँ पे जो clinical PGs हैं, वो clinical medicine सीखने के लिए आए. So it has happened with us also कि कई बार आपको कोई procedure मिला है, but the PG will take it.
or else कोई काम है, you have a chance to maybe examine the patient or actually look into the clinical management of the patient, but then आपको बहुत सारे सैम्पलिंग करनी है, कुछ रिपोर्ट्स पेंडिंग है, कभी कोई पीजी ने कुछ काम दे दिया. सो कम्युनिटी मेडिसिन में डेडिकेटेड क्लिनिकल आवर्स होते हैं. दैट इज द फर्स्ट फैक्ट. हमारी जो पोस्टिंग होती है उसमें हम इंटर्न्स को मैंडेटरीली पेशेंट्स को देखने के लिए पोस्ट करते हैं. अगेन विद द राइडर विच इज ट्रू फॉर ऑल द थिंग्स आई एम सेइंग, that there might be some differences in the practices as we go from one college to the other, because I do realize that some colleges might not have a very good UHTC, बट जो जिन भी कॉलेजेस में एक फंक्शनल पीएसएम डिपार्टमेंट है वो एक डेडिकेटेड क्लिनिकल आवर्स रखेंगे. अभी आई थिंक 3 महीने की हो गई है, तो उसमें आपको ओपीडी में बैठना ही है, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज डेडिकेटेड फॉर. एंड बिकॉज बहुत ज्यादा सैम्पलिंग और बहुत ज्यादा पर्चे नहीं भरने होते हैं, या फिर अगर करना भी होता है तो वो आपको ही करना होता है. सो देन कम्स द सेकंड एडवांटेज, व्हिच इज द पेशेंट इज ऑल योर्स. इन कम्युनिटी मेडिसिन व्हेन यू सिट इन द ओपीडी एज एन इंटर्न, then you actually get to practice what is to come. That is, you are supposed to know that what kind of patients will come today, what will be the first line of management. You will write that management, you will examine the patient, and then you will have the third benefit, which is an opportunity for follow up, which is something which does not happen in clinical OPDs at least. Of course inpatient को आप follow up करके देख सकते हो कि आपकी ट्रीटमेंट का और आपकी इंटरवेंशन का क्या असर हो रहा है, बट ओपीडीज में बहुत ज्यादा चांस एटलीस्ट यहाँ पे टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलता इंटर्न्स को. सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू टेल देम, दैट हियर यू हैव द चांस टू एक्चुअली एडमिनिस्टर द इंटरवेंशन, टेक द फॉलो अप एंड सी फ्रॉम योरसेल्फ कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स. तो तुम्हें एक्चुअली क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग आती है. Knowing the right medicine is just one part of the entire management, right? There are non-therapeutic interventions also. And then there are other patient related factors. तो वो सब सीखने को आपको मिलता है. So after community medicine, after completing the community medicine, if a PG wants to be a family physician, then he's best, I think, suited as compared to any other intern or any other posting. So this was regarding MD, and I think a very well discussed overall residency structure that is there in community medicine. Now the next question comes, what after MD? ठीक है, MD हो गई, 3 साल कर लिए, थीसिस कर ली, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, हो गया. What after MD? What is the scope after community medicine, which a lot of students want to know कि आगे क्या करना है? सो आई थिंक दिस, मतलब हम लोग इस पे काफी लेट आ रहे हैं, बट यूजुअली यही फर्स्ट क्वेश्चन होता है जब भी कोई पूछ रहा होता है ना मुझसे. सो सबको यही लगता है कम्युनिटी मेडिसिन पीजीज की लाइफ देख के कि हाँ हो जाएगा, एंड आई एग्री कि हो जाएगा, मतलब एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्लिनिकल आवर्स. बट दिस इज व्हाट दे वांट टू नो, एंड इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन, बिकॉज कम्युनिटी मेडिसिन जैसे हमारा सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, इसका स्कोप भी बहुत वास्ट है. But for the sake of understanding, let's break it down into compartments. So the first and foremost compartment जो हम सब देखते हैं is core academics, जो सारी ब्रांचेस के साथ अवेलेबल है कि आप अपनी एमडी करो, आप एसआरशिप करो, एपी बनो, प्रोफेसर बनो, एंड यू टेक दैट पाथ. The second one is that you ditch this or you complete your SRship, but then you move to something I like to call core public health. Core public health का मतलब है आप नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में घुस जाओ. नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करो. आप वो आप बहुत सारे लेवल्स पे कर सकते हो. इफ यू वांट टू वर्क इन योर डिस्ट्रिक्ट, यू कैन डू इट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. इफ यू वांट टू वर्क इन अ स्टेट एट अ स्टेट लेवल, यू कैन डू इट एट स्टेट लेवल. देन आफ्टर दैट एज वेल, लाइक नेशनल लेवल पे भी जा सकते हो. कम्युनिटी मेडिसिन पीजी, क्योंकि कम्युनिटी हमारे पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स में बहुत ज्यादा कम्युनिटी मेडिसिन पीजीज रिटेन्ड नहीं है, इसी वजह से एक एमडी कम्युनिटी मेडिसिन को स्टेट लेवल पे डायरेक्टली चांस मिलने के काफी चांसेस होते हैं, मतलब डायरेक्टली एक जॉब मिल जाने के. सो दे आर एट अ गुड पोजीशन टू स्टार्ट एट द स्टेट लेवल इटसेल्फ. देन इसी का ही दूसरा एस्पेक्ट है कोर पब्लिक हेल्थ में, यू डू नॉट ओनली हैव टू एंटर थ्रू द public health programs, you can also enter through developmental organizations or public health institutions. That is, मैं for example, मैं सीधा प्रोग्राम में नहीं घुसी हूँ. प्रोग्राम is one of the things that my institution does. So you can join public health institutions जहाँ पे आपको public health administration करनी होती है. To give you an example, we have something called NIHFW, National Health and Family Welfare Institute, right? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यस. तो उसी के स्टेट ब्रांचेस होते हैं SIHFW. यहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर्स बैठते हैं जो हेल्थ प्रोग्राम को मैनेज करते हैं. देन हमारा थर्ड जो होता है, आई टॉक अबाउट अदर डेवलपमेंटल एजेंसीज लाइक WHO टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज आई थिंक वो सब समझते हैं. इसके अलावा फिर जो हमारी तीसरी चीज होती है, बहुत सारे कम्युनिटी मेडिसिन पीजीज रिसर्च टेकअप करते हैं, बिकॉज इट pays a lot of money if you go into private sector and drug R&D, and because
कुछ लोगों की एक्चुअली मतलब सम पीपल आर एक्चुअली दैट क्यूरियस एंड दे प्रेफर अ डेस्क जॉब. सो रिसर्च में बहुत ज्यादा डेस्क जॉब होता है एक्चुअली. तो जिन लोगों को वैसे शांत वाला चाहिए, दैट वी वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम, देन पब्लिक हेल्थ इज लाइक रिसर्च इज फॉर यू. एज अपोज टू पब्लिक हेल्थ वाले लोग जिनको बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करना होता है, आज आउटब्रेक हो गया आज ही कंट्रोल करना है, वी डोंट हैव टाइम टू सिट एंड डिस्कस व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू अप्रोच इट. सो रिसर्च में वो वाले लोग जाते हैं. प्राइवेट में जाओगे तो यू कैन गो इनटू ड्रग R&D. ठीक है, उसमें आपको एज अ मैनेजर हायर किया जाएगा बिकॉज यू नॉट ओनली नो द रिसर्च प्रोसेस, यू ऑल्सो नो हाउ टू मैनेज पीपल, विच इज अगेन समथिंग इनबिल्ट इन द करिकुलम. हम लोगों को एज अ PG वी आर सपोज टू मैनेज UHTC, वी आर तो सपोज ड्रग टू मैनेज हमारी स्टार्स एंड इंटर्न्स एंड एवरीबडी. इवन ड्रग्स, यस, इन्वेंट्री भी मैनेज करनी होती है, ड्रग हमें आर एन इंडेंट बनाना. ड्रग ड्रग मैनेजमेंट, ड्रग R&D में MD फार्मा नहीं जाएगा? MD फार्मा जाएगा डेवलपमेंट कोर डेवलपमेंट ब्रांच में. इसलिए मैंने बोला यू यू विल बी हायर्ड एज अ मैनेजर. दैट इज यू विल ओवरलुक द प्रोसेस, यू विल ओवरलुक द टीम. ओके। मतलब ये मैं सबसे कॉमन प्रोफाइल की बात कर रही हूँ. ऑफ कोर्स देयर माइट बी सम पीपल जिन्होंने फार्मा भी साइड में पढ़ा और मे बी दे आर दैट कॉम्पिटेंट दैट दे आर एबल टू प्रूव एंड गो इनटू द कोर, मतलब होता है ना लीड साइंटिस्ट वाला चीज में जा सकता है. MD बट कम्युनिटी मोस्ट मेडिसिन लाइकली, ऑल्सो गोज इनटू हाँ फार्मा इंडस्ट्री। हाँ, बट वो लेस चांसेस होते हैं कि वो कोर टेक्निकल में जाएगा. मोर चांसेस ये है कि मैनेजेरियल पोजीशंस मिलेगी अगर आप फार्मा स्पेसिफिकली R&D में जा रहे हो. राइट। क्योंकि एज यू सेड ना, MD फार्मा को टेक्निकल चीजें ज्यादा पता होगी, आपको मैनेजेरियल ज्यादा पता होगी. ठीक You है। will know much in a much better sense how to make sense of the data that is coming, how राइट। to interpret that, how to take actions. No, so ठीक है। this is the private sector. But जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, बिकॉज देर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स जो NGOs होते हैं, नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट्स होते हैं, बहुत अच्छी जगह होती है वो काम करने के लिए, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. सो वहां पे रिसर्च होती है फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेटर गुड. सो अगर मतलब इफ यू आर नॉट वेरी मनी माइंडेड एंड इफ यू एक्चुअली एंजॉय दैट पूरा रिसर्च वाला चीज ना, तो यू कैन गो इन दीज इंस्टीट्यूट्स. और एल्स वी हैव ICMR, एंड ICMR के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. सो वी हैव इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दिल्ली में. उनके भी हर स्टेट में ऑलमोस्ट एक इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेड है एक इंस्टीट्यूट, मतलब एक रिसर्च टॉपिक पे. फॉर एग्जाम्पल द वन इन जोधपुर डील्स विद इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च इन NCDs. तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है. सो दिस वाज अकेडमिया फॉर पब्लिक हेल्थ रिसर्च. देन कुछ लोग आते हैं, जैसे आपने बोला क्लिनिक अपना खोलना है या फैमिली मेडिसिन में जाना है, they can take up a path which I've seen less people do but is definitely an option, जिसमें वो लोग MRCP कर सकते हैं. So community medicine branch क्योंकि एक clinical branch होती है, तो you still have an option to give MRCP. So a lot of people do MRCP, come back to India, run their private clinic. Or else, what is the most common path for, मतलब I would say second most common after academia is you give UPSC या any of the CMS exams. उसमें क्या होता है कि अगर आपने स्टेट का कैडर ज्वाइन कर लिया या फिर हमारा जो सेंट्रल कैडर है पब्लिक हेल्थ का, जब हम लोगों की UPSC के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है सारे डॉक्टर्स की, सो कम्युनिटी मेडिसिन वालों को दो ब्रांचेस मिलती है. वन इज कॉल्ड द अकेडमिक और टीचिंग कैडर, द अदर वन इज कॉल्ड नॉन टीचिंग कैडर. सो टीचिंग कैडर वाले प्रोफेसर्स बन जाते हैं सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में, हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं. जो नॉन टीचिंग कैडर वाले हैं वो इन सब हेल्थ प्रोग्राम्स में अलग अलग लेवल पे जाते हैं, वही इन सब इंस्टीट्यूट्स में होते हैं. सो यू कैन आइदर ज्वाइन थ्रू अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वाला रूट या फिर आप एज अ कंसल्टेंट भी ज्वाइन कर सकते थ्रू हैं. ये UPSC। मोटा मोटा. हाँ, तो उसमें से जो नॉन टीचिंग कैडर में जाते हैं, एक होता है GDMO कैडर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर कैडर. उसमें जो लोग जाते हैं उन लोगों को PHC CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहीं पे भी बिठा दिया जाता है. सो तब उनका वो वाला जो कीड़ा होता है फैमिली मेडिसिन वाला, वो शांत हो जाता है. एंड इट्स अ वेरी गुड पोजिशन इन द सेंस, अगर किसी को सही में होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अपना क्लिनिक चलाना सीखना है और वो एक्सपीरियंस लेना है ना, दैट आई हैव एन एरिया एलोकेटेड टू मी जिसकी पॉपुलेशन की हेल्थ मुझ पर डिपेंड करती है, एंड आई विल ऑल्सो सी द क्लिनिक्स एवरी डे बिकॉज आई वांट टू हैव दैट वन ऑन वन कनेक्ट, देन दैट्स द बेस्ट पाथ टू गो. उसमें बस चांस यही है कि आप बिकॉज आप जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हो, आपको इंस्टीट्यूट्स में भी पोस्ट किया जा सकता है, तो थोड़ा वो बोलना पड़ता है कि मुझे यही वाली प्रेफरेंस है मेरी. Most of the people get their preference because हमारे पास in general shortage है doctors की. Then the तो last part is, क्या क्या? लास्ट जो एकदम आ जाता है वो आता है कि आप इंटरनेशनल डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर लो. बहुत सारी हैं. FAO है, WHO है, WAH है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ऑल्सो नाउ, बिकॉज वी आर नाउ डीलिंग विद वन हेल्थ, तो पब्लिक हेल्थ और भी सारे सेक्टर्स में घुसता चला जा रहा है. You have international NGOs, BMGF, I already talked about. There's something called Chai Clinton Health Access Initiative, and Japago, very big names, pay you very nice salary, and corporate structure होता है उनका, मतलब in terms of work life balance or in terms of
human rights of labor. They are very good organizations to work at. So these are broadly the areas where a community medicine PG might end up. So let's talk about the last one because I think सबसे ज़्यादा fascinating लोगों को यही लगता है कि WHO में काम करेंगे या इधर काम करेंगे. Exactly. Number one, how feasible is this? Number two, what is the path to such organization? And number three, what are the salaries there? Okay. So let's start with the number three because वो सबसे easy है. They are actually they mostly for all practical purposes set the industry standard. मतलब उन्हीं से compete करते हुए ज्यादातर organizations जो हैं वो अपना salary structure बनाती हैं, तो salaries are very very competitive for most of the part. मतलब considering हम बाकी सारे अगर areas को compare करें तो they have a higher salary. International organizations, all of them, not just the UN one, the other ones also. So now coming to the range will be, जैसे for a starting entry level position starts anywhere between 1.3 lakh per month to 1.7 lakh per month. These are the entry level positions. Entry level MD के बाद होती है आपकी, MD या फिर MBBS के 5 साल का एक्सपीरियंस, बट दैट इज अ वेरी नैरो रेंज, मतलब वो बहुत ही कम प्रोफाइल्स के लिए यूज होता है. And these organizations you're talking about, for example, दिल्ली में यूनिसेफ का सेंटर है या दिल्ली में WHO का सेंटर है, वहां पे you get placed, वहां का you are talking about. हाँ, सो बस यहाँ पे यही कैच है. द रीजन मैं ये वाली सैलरी मेंशन नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत ही कम फ्रैक्शन वाले लोगों को मिलती है. दिल्ली वाले सेंटर्स में बैठने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए होता है, तो उसकी सैलरी भी फिर उतनी ज्यादा हो जाती है. तो अगर इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट स्टेट लेवल, ठीक है. स्टेट लेवल पे या तो आप WHO के एम्प्लॉई हो, विच मोस्ट लाइकली अगर आप स्टेट लेवल पे काम कर रहे हो तो आप WHO के सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर, विच इज इक्विवेलेंट टू, यू कैन थिंक कि जो स्टेट लेवल ऑफिसर की एक वो होती है ना, प्रोफाइल होती है, उसी के जैसी प्रोफाइल होती है इन टर्म्स ऑफ द वर्क दैट दे डू, इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव टू डील विद. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वहां से अगर हम सैलरी कंपेयर करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कंपेटिटिवली वो ज्यादा है. यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस आपको पे करेगी वो थोड़ा सा दिल्ली की एसआरशिप से कम होता है, बट देयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वहां पे फिर एसआरशिप में भी इन जनरल कम मिलता है. तो वहां पे स्टेट को स्टेट से कंपेयर करेंगे तो अगेन WHO ज्यादा है. दिल्ली में अगर हम कंपेयर करेंगे तो अगेन WHO ज्यादा है. जैसे दिल्ली में आपको वी लेफ्ट एट 1.2 पर मंथ, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करते ही 1.5 एटलीस्ट आराम से इजीली मिल जाएगी. सो उस हिसाब से इट इज मोर. एंड देन नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू गेट इनटू WHO, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना. तो वन इज, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि सारे जो ब्रांचेस होती है ना वो अपने स्टूडेंट को वही सिखाती है जो उन्हें आगे करना है. एक मेडिसिन का PG जो है वो मेडिसिन में पेशेंट्स देखता है, सीखता है. सर्जरी का PG सर्जरी करता है, सर्जरी सीखता है. सो आफ्टर एट द एंड ऑफ देयर MD दे हैव अ CV टू शो, एक्सपीरियंस टू शो, राइट. MD में अगर आपको WHO में, कम्युनिटी मेडिसिन में WHO में घुसना है, सो यू हैव टू बिल्ड योर CV, which is that as a PSM student, it pains me to say कि community medicine में हम सिर्फ student बन के रह जाते हैं. This is the biggest flaw we have in our medical education system. So we are still studying about public health. We are not actually placed into any health system or for that matter in any part of the health machinery. हम जो थोड़ी बहुत मैनेजमेंट सीखते हैं वो सीखते हैं अपने खुद के UHTC से, बट दैट UHTC डज नॉट कनेक्ट टू एनीथिंग ना. एंड पब्लिक हेल्थ में एवरीथिंग इज कनेक्टेड. एट द स्टेट लेवल ऑल्सो आई शुड अंडरस्टैंड कि डिस्ट्रिक्ट पे कैसे काम चल रहा है, नेशनल लेवल पे कैसे चल रहा है, इंटरनेशनल पे कैसे चल रहा है. देन ओनली आई कैन एक्चुअली मेक डिसीजंस व्हिच मेक सेंस. मतलब दिस इज द आइडियोलॉजिकल थिंग बिहाइंड इट. अब होता क्या है, क्योंकि हम लोग सिर्फ PSM पढ़ते हैं, WHO में आने के लिए आपको थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करके दिखाना पड़ता है. द इजीएस्ट वे आउट फॉर योर ऑडियंस विल बी कि आप एटलीस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर लो. I was again very very fortunate that I got the chance to participate in research projects, participate as a faculty, that is teach in many research methodology workshops, and also work as a short term consultant with an NGO. बट अगेन अ बिग डिस्क्लेमर कि मैं दिल्ली में थी तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली इजीली मिलती हैं. तो I was able to grab onto them. I had obviously expressed very willingly I want to do this because I had that notion in mind कि मुझे public health में जाना है तो CV बनाना होगा. So this is something that the I think your audience should take with a pinch of salt कि आपको ना comfortably मिलेगा नहीं वो plate पे serve. अगर WHO में जाना है तो फिर definitely you have to do something extra. क्या एक्स्ट्रा करना है, दैट ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्लोर, आपकी जो वहां पे जो भी कंडीशन है.
जिस भी सिचुएशन में आप हो। बट हैविंग सेड दैट, अगर नहीं भी किया, चलो आपने कम्युनिटी मेडिसिन कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद थोड़ा सा कहीं पे काम कर लो, एंड देन यू कैन विद दैट एक्सपीरियंस, बेसिकली डब्ल्यूएचओ नीड्स सम एक्सपीरियंस कि आपने रियल वर्ल्ड में काम किया हुआ है हेल्थ मशीनरी के साथ। विद दैट यू कैन अप्लाई फॉर पोजीशंस। द कॉमन मोस्ट पोजीशन जो एंट्री लेवल की होती है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोजीशंस होती है, समथिंग कॉल्ड अ सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर, एज आई टोल्ड यू अबाउट। दे कम फ्रॉम द एनपीएसपी प्रोग्राम, वो जो पोलियो वाला पूरा नेटवर्क था ना डब्ल्यूएचओ का, उसका रेमिनेंट है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, आई जस्ट रेड योर एक्सप्रेशन। बेसिकली उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, सो देयर अ एसएमओ प्रेजेंट एट ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। दे डील विद कलेक्टर्स, दे डील विद द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स ऑल्सो, दे डील विद द पब्लिक एज वेल, सो इट्स अ गुड satisfying position. Then we have other program specific positions. So WHO also has focus areas, जैसे universal health coverage एक है, then neglected tropical diseases एक है, urban health करके एक है, देन आईडीएसपी से जुड़ा हुआ भी उनका एक इमरजेंसीज प्रोग्राम है जो एक है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एरिया, ट्राई टू वर्क अराउंड दैट प्रोग्राम maybe for 2-3 years, and then try to apply for a position in WHO. Again, those positions will be available at state level as well, district level as well, national level as well. national पे बस वही वाला राइडर आ जाता है कि थोड़ा सा वो चलता है, मतलब एक्सपोजर का फैक्टर होता है कि दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, तो आई वुड से इट्स इजियर फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स। तो एंड यू गेट एज अ कंसल्टेंट, मतलब ये भी है कि आप यू पहले एज अ जॉइन एज अ कंसल्टेंट करते कंसल्टेंट। हो। हाँ हाँ, परमानेंट पोजीशंस बहुत कम है, बहुत रेयर है डब्ल्यूएचओ में, बट देन अगेन उनका रीहायर रेट बहुत ज्यादा है। अगर अच्छा। आपने अच्छा काम किया, पीपल लाइक यू, दिस इज ट्रू इन पब्लिक हेल्थ पूरा का पूरा, कि अगर आपने काम अच्छे से कर दिया ना, देन पीपल विल मेक श्योर दैट दे रिटेन यू, क्योंकि हमारे फील्ड में काम करने वाले लोग बहुत कम आते हैं। पीपल यूजुअली टेक इट आउट ऑफ एक्सक्लूजन, मुझे कुछ और नहीं मिल रहा तो पब्लिक हेल्थ दे लेता हूँ। सो ये कम्पिटेटिव एडवांटेज है कि अगर आप मन से आ रहे हो, मन से काम कर रहे हो, तो यूल बी रिटेन। चलो ठीक है। सो फाइनल आई थिंक, सो इफ वी टॉक अबाउट, एक रूट हो गया हमारा फैकल्टी पोजीशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, यू जॉइन एज एन एपी एंड क्लाइंब अप द लैडर। सेकंड पोजीशन हमने बात की, यू जॉइन एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स जो है हमारे इतने सारे, यू जॉइन इधर एट अ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। सिंस यूर एन एमडी सी कम्युनिटी मेडिसिन, मोस्ट लाइकली you'll get absorbed at a state स्टेट level, लेवल and those jobs are also permanent, I'm assuming. दोनों है, दोनों टाइप की है। स्टेट लेवल में यू कैन एंटर एज अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ऑल्सो, विच इज अ परमानेंट पोस्ट, मतलब आप सरकारी अफसर बन जाते हो ना स्टेट के। एज अ कंसल्टेंट ऑल्सो यू कैन ज्वाइन, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल थ्रू आउट ऑल द इंस्टीट्यूट, थ्रू आउट all the levels of governance that we just talked Governance. about. Then third was this international organizations like WHO, UNICEF, FAO, etc., etc., in which again most of the jobs are in a technical consultant, temporary jobs. Yes. Few are permanent jobs, but then again the rehiring rates are quite good. Now I want to talk about two other important things. First is hospital administration. Second is biostats, as a biostatistician. Uh, and yeah, these main two things I want to ask. Okay, so what about them? Like the educational scope, how do you So get because I specialized yeah, education in them, and what are the... because I Mhm. know few of my seniors from AIMS who, after completing their MD in community medicine, did a MHA program from AIMS, Masters in Health Okay. Administration. Health Administration. So is that also a viable option? सो हेल्थ में जो हमने हेल्थ मैनेजमेंट की बात की थी ना, सो वी ऑल्सो स्टडी कम्युनिटी मेडिसिन पीजी, ऑल्सो स्टडी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा भी देर इज समथिंग कॉल्ड, सो एमडी कम्युनिटी मेडिसिन को कंपेयर करते हुए देर इज समथिंग कॉल्ड एमडी सीएचए विच NIHFW ऑफर्स। दैट इज अ मास्टर्स इन कम्युनिटी, सॉरी हाँ, कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोग्राम मैनेजमेंट दोनों आ जाता है। वो वाली डिग्री स्पेशलाइज करती है मैनेजमेंट में, वो लोग क्लिनिक्स नहीं देखते, उनका फोकस बाकी चीजों पे थोड़ा मेडिकल कम होता है कंपेयर सुपरिंटेंडेंट टू... वाला जो जॉब होती है, सॉरी, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जो हॉस्पिटल में होता है, एग्जैक्टली वो बोल। एग्जैक्टली। हाँ, तो एमएस भी हो सकता है, या फिर वो प्रोग्राम मैनेजर भी हो सकता है। ओके। जो आप एमएचए की बात कर रहे हो, दैट इज अ थोड़ा और हायर लेवल पे आता है ना, मतलब उनके जो जिनको वो लेते हैं, जो एलिजिबल पॉपुलेशन उनकी है, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड पीपल, सो दे वांट यू टू हैव सम एक्सपीरियंस, देन यू आर एलिजिबल फॉर एमएचए, या फिर आपने एटलीस्ट एमडी किया होता है तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है ना। एमडी सीएचए ऑल्दो यू कैन डायरेक्टली एंटर आफ्टर एमबीबीएस, सो दैट इज वन डिफरेंस दैट आई नो ऑफ। उसके बाद आ जाते हैं कि इसमें एग्जैक्टली करवाया क्या जाता है।
सो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना, वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। जैसे कम्युनिटी मेडिसिन में तो उसका 30 मार्क्स का एक आंसर आ सकता, मतलब क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज्यादा तो कम ही आएगा। बट वो लोग वो पूरा 30 मार्क्स का जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज होती है, स्टाफ कैसे मैनेज होता है, हॉस्पिटल का फ्लो क्या होता है, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होती है जब आप हॉस्पिटल मैनेज करते हो इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर दोनों टाइप का, बाहर डिजास्टर हो गया तो हॉस्पिटल के फंक्शंस कैसे जो है वो सफर करेंगे, कैसे मैनेज करना है। हॉस्पिटल में डिजास्टर हो गया तो उससे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बिकॉज यू हैव बायोलॉजिकल वेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। So this is a very core skill set which people require. To answer the question that what is the scope of MD community medicine going there, I've seen many people, but those people have also had an additional degree like MD and hospital administration. So my conclusion is that when you are getting these jobs, because we have to understand also that these are very politically empowered jobs as well. Yeah. So there are chances that the government would want to, like अगर उनका बहुत अच्छा कोई institute है, they would want somebody who they can trust as well. Like we are casting aside other political relationships and influences, लेकिन उनको चाहिए कि कोई experience इंसान होगा, है ना। तो मैनेजमेंट की डिग्री इसीलिए, मतलब having a specific degree will give you an edge. So that just goes on to say कि in my opinion, if you only have community medicine, then your chances for an administration position will be less. If you have community medicine experience, an additional degree, showing your managerial skills, demonstrating your managerial skills, then your chances will be higher. So I think the people who did community medicine and went into hospital administration focused towards that area. That's how they were able to go, not only solely on the basis of community medicine. And now that we have a competitive degree also, तो अब तो I think chances थोड़े से और कम हो जाए. And regarding biostats, because there is a National Institute of Biostatics as biostats as well. Yes. क्या So वो भी पास biostats. सो बायोस्टैट जो है ना, डेफिनेटली इज समथिंग दैट यू कैन डू। लाइक अभी आपके उसमें एंड में हम बात करने वाले हैं ना इसके बारे में, कि इंडिया के बाहर क्या स्कोप है। सो वन ऑफ द कॉमन मोस्ट थिंग दैट पीपल डू, जो मैंने बाहर करते हुए देखा है, दैट दे गो फॉर PhD और मे बी एन MPH एंड दे स्पेशलाइज इन बायोस्टैटिस्टिक्स, बिकॉज ऑल ऑफ दीज R&D कंपनीज दैट वी टॉक्ड अबाउट ना, जहां पे भी R&D होता है, जहां पे भी मास लेवल पे डेटा के साथ डील किया जाता है, and now that we have digital programs, we have big data also coming into picture, तो बायोस्टैटिस्टिशियंस का रोल मेरी नजर में तो एटलीस्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है. A community medicine PG is very well placed to go into that field, but just as hospital administration, you will have to work towards it. हाँ, तो सिर्फ कम्युनिटी मतलब सी डिपेंडिंग अपॉन योर प्राविस, मतलब आपको कैसी एजुकेशन देता है डिपार्टमेंट, आपका क्या एक्सपोजर रहा है, हो सकता है कि आप उसी लेवल का बायोस्टार्ट्स करो जो किसी और ब्रांच से आया हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक डेटा साइंटिस्ट आके करेगा, बट एज एट दिस हमारी डिग्री की हाँ उतनी वो है नहीं, मतलब दैट इज नॉट व्हाट कम्युनिटी मेडिसिन PGs आर जनरली हायर. इट माइट चेंज इन टाइम. Now we have our workshops also coming up. We have dedicated, I've seen in my last 3 years itself कि people have taken more interest in it. और वो आगे जाएगा भी, because as public health PG anyway we are supposed to deal with data, जो मैं अभी भी अपनी करंट जॉब में कर रही हूँ, तो उसके साथ नीड आती चली जाती है. अब आपका डेटा का सेट बड़ा हो गया, डिजिटल सिस्टम से और ज्यादा बड़ा डेटा आ रहा है, तो यू हैव टू लर्न द टेक्निक्स विद दैट ऑल्सो. But right now, I do not see anybody solely taking the biostats part again, only with the community medicine branch. Great. So the last question that I want to ask you is, in fact, the second last question, what are the opportunities outside India after doing community medicine? So one statement that I really like telling my husband, who's a clinician, is that it's much more easier for me to move outside India as a public health professional than him. So एक तो basic difference ये है in terms of ease of movement and scope also. काफी easy होता है because we do not write prescriptions ना, तो हम लोगों को medical license exams नहीं देने होते for most of the parts. I'll talk about educational opportunities first because most of the people take up that route when they go outside. So they go for PhDs and MPH. So some of my professors tell me that if you've had a good community medicine education, then MPH is just a stamp कि आप एक fancy foreign university like London School of Tropical Medicine या Hopkins हो गया, Harvard से stamp लगवा के आ गए that I've done MPH also, because there you build a network and then you can get on to that international wala part easily. So public health में, because we have to build up CVs and we work with people and programs, networks matter a lot. So what the
degree offers you when you are doing it only for the sake of stamp is that particular network that you'll get to meet new people, have do your projects with new people, and that is how you will get onto that path. The other thing they do is PhD, which is much more sensible. So there are many different subjects which different institutes offer. Depending upon what is your area of interest, the best institute might differ. So, again, London School of Tropical Medicine is the best one or the most commonly frequented option by the Indian scholars. उसका ट्रॉपिकल मेडिसिन पे बहुत फोकस होता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस वाली चीजों पे काफी फोकस होता है, जो मुझे पता है, आई माइट बी रॉन्ग हियर. देन देयर इज जॉन्स हॉपकिंस जहाँ पे लोग बायोस्टैट्स, वैक्सीनोलॉजी, इन चीजों के लिए काफी ज्यादा जाते हैं. देन सिमिलरली देयर आर स्पेशलिटीज फॉर हार्वर्ड आल्सो. So then you can do your PhD. For PhD also, if you've had some public health experience, the chances of you getting selected in a good public health school abroad gets higher, because even they want to hire people who can do the work in field. है ना, मतलब अकेडमिया में अगर हम ब्रॉडली देखें, पब्लिक हेल्थ का स्कोप देखें, तो अकेडमिया इज अ वेरी स्मॉल ब्रांच. वो अलग बात है कि हम लोग काफी सारे स्कॉलर्स देखते हैं, वहां पे चले जाते हैं. एज अ रिजल्ट पब्लिक हेल्थ में कोर पब्लिक हेल्थ वाले लोग, एमडी कम्युनिटी मेडिसिन वाले आपको रिलेटिवली कम मिलेंगे. मतलब उतने नहीं मिलेंगे जितने सर्जरी में सर्जन मिलेंगे ना, उतने यहाँ पे कम्युनिटी मेडिसिन के पीजी नहीं मिलेंगे. बिकॉज अ लॉट ऑफ क्लिनिशियंस ऑल्सो एंड अप इन पब्लिक हेल्थ एंड लाइक दैट. सो पीएचडी में करने का यही एक तरीका होता है, दैट यू फाइंड योर नीश, you try to work towards it, again build up a CV, then apply to a good school. They will take you up, make you the scholar. In the PhD you will get to do many projects, you'll get to work with many people in that area, which again gives you the distinct advantage. Also, not to say, of course, ये तो है ही कि if you have done a PhD, then you have an educational degree which gives you an advantage in terms of getting hired, because then you are more preferred for certain positions, especially the research oriented position. तो उसमें और higher salary, higher positions मिल जाती हैं. Then PhD में PhD के अलावा there's another degree that I know of. I think it's called DPD, something like that. I can get back to you with the exact name and you can put that. उसमें आपको पीएचडी जितना रिसर्च वर्क नहीं करना होता है, बट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करने होते हैं. सो इट्स मच मोर रिसर्च ओरिएंटेड बट हैंड्स ऑन रिसर्च ओरिएंटेड. सो आई कैन गेट बैक टू यू विद द नेम. वो हॉपकिंस प्रोवाइड करता है. आई थिंक इट्स अ 3-year प्रोग्राम वेर इन फॉर 1 year you study MPH and 2 years you spend at one of their sites managing some project or carrying out some project. That can be a research project also, that can be a public health project also. इसके अलावा जो फिर बाकी स्कोप जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं, विच आर सिंपल जॉब्स. सो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. इंडिया लेवल पे यू डू गुड वर्क, you'll be posted to, you can apply for a regional level position, then international level position. बहुत सारे लोग, देयर आर मेनी पीपल आई हैव हर्ड ऑफ, जो इंडिया से डायरेक्टली जिनेवा हेडक्वार्टर्स में काम कर लेते हैं. सिमिलरली बीएमजीएफ, इफ यू वर्क विद, देन बीएमजीएफ आल्सो वर्क्स इन सर्टेन कंट्रीज. उनका साउथ ईस्ट एशिया पे काफी फोकस है, सो यू कैन गेट posted to other countries. You can apply for research positions. So Cochrane is a big organization. किसी को core research में जाना है, they have headquarters in the I think UK, and वहां पे जाके you can work with them also. So similarly, जैसे techies apply करते हैं ना, you have certain profiles. Similarly, community medicine PGs can also apply that. Of course, they'll need to take TOEFL, GRE, all of these exams, but not the medical licensing exam for these kind of positions. जहाँ पे भी basically prescription नहीं लिखनी, वहाँ पे medical license exam नहीं लगता है. So basically, you have Doctors Without Borders, they make very good postings. Yeah. So basically, if your community medicine program does not do a lot of research in these subspecialties, maybe you can do an internship or a part-time job in such organizations to start with, build your CV, then climb up the ladder higher, apply for positions at international level, give the respective exams. Basically, what you make of it, that's the sense that I'm getting. Yeah, exactly. So internship do only for very specific things, कि आपको government के किसी specific organization में घुसना है, because at least as MD leverage your degree enough to get a job in that area. अगर MD कर ही ली है, तो you don't need to go for internship then, unless it's for a very specific purpose. Yeah. You can take a job, you can get paid lower, that's okay. And in general, this is what my seniors tell me. I'm still in the first 5 years of post MD, but this is what they tell me कि first 5 years में MD की जो salary होती है, it stays almost at par with their colleagues, and it's a slow growth. But after 5 years, it's a steep growth, because after 5 years, you get that distinct advantage
now not enough people have entered core public health, but you have 5 years of experience. So now you get hired for better positions, and because you've been working well, and in 5 years you've built a sufficient enough network to actually get placed at good positions. तो तो वो वाला एक I'm yet to मतलब basically experience that, but the core message was this only, that don't be afraid to step out of academia after your MD. Get a job. It might be paying less, but it will give you experience. It will give you network, which will then pay your way forward. So I think most of the topics we have covered in today's video. Just last question, if you don't mind, what are the salaries that one can expect, if they are placed in a public health program, let's say after an experience of 3 to 5 years, what is usually the industry norm? So SR-शिप तो आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करती है. Yeah. ऑफ कोर्स यू गेट दैट सैलरी डिपेंडिंग ऑन आपका मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है. State level, now the salary structure in PSM will differ according to the governance administrative level also. कि national level पे chances of you getting paid higher are obviously more. But it's not always true. It also, of course, depends upon the profile. That is the third variable. तो जो मैनेजेरियल सबसे अच्छी पेइंग पोजीशंस होती हैं वो मैनेजेरियल पोजीशन होती है. जब आपको प्रोग्राम मैनेजर बनाया जाता है या आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया जाता है, सो दे पे यू अ लॉट, विच विल बी समवेयर अराउंड, आई थिंक इट विल स्टार्ट समवेयर अराउंड 2 lakhs or something like that, 2 lakhs per month. This is what I have observed or what I have seen. But again, the rider being that you have to have CV, because आपका जो सैलरी बेनिफिट होगा वो आपके सीवी से डायरेक्टली कोरिलेट करता है. दिस इज द कॉर्पोरेट थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, व्हिच इज डिफरेंट. मतलब हॉस्पिटल्स में जनरली ऐसा नहीं होता ना. तो एक तो ये हो गया कि आपको यहाँ पे मैनेजरियल लेवल पोजीशन जो है नेशनल लेवल पे मिल जाएंगी अच्छी डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में 2 lakhs के आसपास से. इसके अलावा जो टेक्नो मैनेजरियल है, विच इज समथिंग व्हाट आई डू, कि टेक्निकल वर्क भी है, दे कम एट अ लोअर वन. वो होगी 1.75 per month to 1.9 per month. मतलब slightly lower, not that low also, because वो mix होता है. And again, this is a national level पे जो मुझे मिल रही है salary, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ. I'm not a direct employee of NCTC, by the way. That is another story altogether, that I'm working in a multi-stakeholder environment. But मेरी funding, क्योंकि मेरी जो पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज ऑफ दैट आई गेट हायर सैलरी. सो दैट इज अनदर डिफरेंस. इन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर यू विल गेट मॉडेस्ट सैलरी. You might even get below 1 lakh. In fact, that will be the salary below 1 lakh for a fresher MD for most of the colleges. This will be the salary. So the smart thing to do would be, so ये हमने कवर कर लिया. बट हाँ, 1 लाख तक तो आपको मिल ही जाती है. 80 to 1 lakh तक पोस्ट MD से you start with that. And then if you work at state level, if you work at a good NGO, then you can get somewhere between 1 to 2 to 1.5. You can always work your way up if you have very good negotiation skills, because as I said, it's a corporate structure, so there's that flexibility that you can leverage your experience, you can leverage your network and aim for a higher salary. ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शैलेजा. आई थिंक वी हैव कवर्ड कम्युनिटी मेडिसिन इन डिटेल. इतना तो मुझे भी नहीं पता था फ्रैंकली. एंड बहुत सारे MBBS स्टूडेंट को व्हेन दे जॉइन अ कम्युनिटी मेडिसिन पोस्टिंग, जो रूरल पोस्टिंग होती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं पता होता कि आगे क्या स्कोप है, CCM में कम्युनिटी मेडिसिन में करते क्या हैं. सो आई थिंक इट वाज अ आई ओपनर फॉर मी, एंड आई होप इट वाज as informative for the rest of the students as well who are thinking of joining community medicine. So thank you so much, Dr. Shaileja. Any parting words that you would like to say to the all the aspirants? It's a disclaimer that whatever I've said because I love the subject. And to only give you the, I don't know how to put it. Basically, I want to tell you that I've never regretted this decision in my life. And I do understand that community medicine still is an unconventional choice, and that hurts me. So I just want to say कि भाई बहुत कम competition है, बहुत मजे वाला काम है, आ जाओ. So मैंने बहुत प्यार में बोला है, I know, but even as a technical person now, having completed my education and comparing my salary benefits and other benefits, I can still very confidently say that I made the right decision and people choose this branch. It's a beautiful branch. Okay, thank you so much, Dr. Shaileja. With that, we'll end up today's video and we'll come up with another specialty very soon. See you in the next one. Bye bye. Now, thank you, Dr. Rishabh. Bye bye.